ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमस्ताराय नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या आचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओं श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओं श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः। ओं श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः। ओं श्री वेदव्यास महर्षये नमः। समस्त रामचंद्र स्वामिनः भक्तेभ्यो रामायण शास्त्रस्य आचार्येभ्यो अस्मद्गुरुभ्यो नमः। तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्य बोध पुराणे इतिहासोक्त भगवद्भागवत दर्शनानुग्रहानुभवं सनातन धर्म वैदिक संस्कृतेः सांप्रदायानां शास्त्राणां गुरुशिष्य भक्त भगवत परंपरायाः पुनरुत्थान जागरण विश्वव्याप्ति अस्मिन् कर्मणिष्ठ अस्माकं सह समस्त धर्म संस्थापकानां कंकणबद्धानां आयुरारोग्यैश्वर्य क्षेमस्थैर्यधैर्य वीर विजयादि सत्संपदा साधना सानुकूलता शक्ति प्राप्ति बाह्य अभ्यंतर शत्रु विघ्न निर्मूलन द्वारा धर्म संस्थापन कार्यार्थे नित्य निरंतर दिग्विजयार्थम श्री ब्रह्मांड पुराणांतर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्र से पारायण अध्ययनम तदनंतरम श्री दत्तात्रेय परमात्मनः सहस्रनामावल्या द्वितीय दिवस पारायणम वयं सर्वे करिष्यामहे। आदौ श्री रामनाम संकीर्तनम। ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम 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 जय राम जय राम जय राम। ओं नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओं श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। श्री ब्रह्मांड पुराणान्तर्गत रामायण शास्त्रम् उत्तरकाण्डम् पंचम सर्गः श्रीराम गीता श्री महादेव उवाच। फ्रेंड्स चैंट फ्रॉम द वर्स नंबर 1 onwards to 10. ओम ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मन विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमां चचार पूर्वाचरितं रघोत्तमः राजर्षिवर्यैः अभिसेवितं यथा सौमित्रिणा पृष्ठ उदारबुद्धिना रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः राज्ञः प्रमत्तस्य मृगस्य शापतः द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाः राघवः कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभुं रामं रमालालितपादपङ्कजं सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत् त्वं शुद्धबोधोऽसि सर्वदेहिनाम् आत्मास्य धीशोऽसि निराकृतिः स्वयं प्रतीयसे ज्ञानदृशां महात्मने महामते पादाब्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम् अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो भवापवर्गं तव योगि भावितं यथाञ्जसा ज्ञानमपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि मां श्रुत्वाथ सौमित्रिवचोऽखिलं तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधीः विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः आदौ सवर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादित शुद्धमानसः समाप्य तत् पूर्वमुपात्तसाधनः समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये
क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादृता प्रिया प्रियौ तौ भवतः सुरागिणः धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं तद्हानमेवात्र विधौ विधीयते विद्यैव तन्नाशविधौ पठीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितं नाज्ञानहानिर्न च रागसंक्षयः भवेत् ततः कर्मसदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्माद्मुधो ज्ञानविचारवान् भवेत्. As I was telling you, dear friends, we were discussing these shlokas are of highest importance and value, completeness. है ना? With ekagrata, with shraddha, buddhi and shraddha. When we listen, we get such guidance, sufficient and complete for us to wean away from the path of falling down or destruction and move in the path of moksha or liberation. Mm. Straight away entering into the text, we have seen Bhagavan Rama's manasika paristhiti, etc., etc. Yet he has balanced himself, and in some days, then he was in the earlier Sarga, fourth last sloka. How he is, that is explained to us. The same thing here in the first sloka we see Bhagavan beautifully, one living that tapasvi ki tarah, rishi ki tarah. Second is fulfilling his duty of being a Raja. Third one is Chachara Purvacharitam. As the Purvaja Rishis, Raja Rishis have lived life, that life of detachingly ruling the kingdom, he was living life. He established himself in that perfect way of living. So Rama freed from all outer and inner worries. Raja Shivare Abhisevitam Yatha. And things are going on routine once in a while. Even Lakshmana ji also. कुछ तो बात करनी है भैया से. Now you can't talk about Sita Mata because you will kick only. But then क्या कर सकते हैं? What is the non-controversial, useful topic that you can talk only regarding Tattva, Atma, Jnana, Bhakti, all of them. Therefore, Saumitri will come again and again. He will ask various things regarding sadhana, sadhya. Bhagavan क्या है ना? He knows it directly, can say, but he takes the authority of the Purva Kathas before the Rama Treta Yuga, whatever happened in the Krita Satya Yuga. ये सारों को आधार में लेकर भगवान रामा used to teach Lakshmana Swami all the knowledges that are required. Now all the knowledges are the jnana regarding artha prapti, jnana regarding kamana purti, jnana regarding dharma, jnana regarding vyavahara, all. But most importantly, jnana regarding moksha. This Ramayana is Adhyatma Ramayana. Adhyatma Ramayana is Moksha Ramayana. तो मोक्ष पुरुषार्थ का ही लक्ष्मण स्वामी का प्रश्न का जो भगवान ने जवाब दिया वही डिटेल में बताया जाएगा. बट हिंट दिया जाएगा कि सौमित्रिना पुष्ट उदार बुद्धिना. What udara buddhi Saumitri when he used to ask. Rama katha praha puratani shubhaha. All the puratana kathas, shubhaprada katha, he used to speak out. One example is given. Pramattasya nrugasya ragnasya. Dvijasya shapataha tiryaktvam. Because of the Brahmana shapa, he became Tiryak Yoni, Raja Nruga, for one mistake done by him, Pramattase. Yesterday we saw all that story. So by that, what is the essence? Two things are done. One is, the more finer we become, the smaller than the smallest mistake also will have bigger than big consequence. This is one learning. Second, Raja Nruga, by his choice, he has not done any mistake. And yet that cow has come here, he's given it. He had such a terrible shapa of becoming Kurkalasa. Up to it happened in the Krita Yuga. त्रेता भी हो गया. इनको द्वापर में कृष्ण अवतार के समय उनको कृष्ण जी के after half of his life children are born, everything,
That time इनको मुक्ति मिला. वो कितना लंबा. So remembering these stories, through the stories, answering the queries of Lakshmana Swami, here Bhagavan is consoling himself also compared to Nruga's dukkha of becoming chameleon. My dukkha that I had to leave Sitaji is not being that one. Okay? Yeah, Sitaji has not done any mistake. I also have not done, but what to do? तो प्रजाओं का ये जो है, प्रजा तो हमारे स्वामी होते हैं, we have to serve them. So it is their opinion unanimous. Therefore, I had to live. This is inevitable. Means what? A high level of very sublime wisdom gathered to conquer or overpower any sort of bigger than big dukkha also. दुख संयोग वियोग कर रहे हैं यहाँ श्री राम जी योग संगीतम टीचिंग टू ऑल ऑफ अस आल्सो. Don't look for shortcut method or bylanes or non-positive paths. Just write yes, dharmic marga of adhyatmikata. Be on that steadfast. Don't do any mistake. Then you will keep on evolving. That's the idea in this shloka. Okay. Yeah? Thereafter, now starts the Rama Gita ka topic. Kadachit. Once upon a time. This Kadachit here in Bhagavatam is Ekada. That in Tulsi Ramayana, Ekabara Bravo. Sukha Asina. So kadachit, once upon a time, ekante upastitam prabhum. The Prabhu, the Lord, who was upasthita, seated ekant mein, just with himself, must be thinking about Sita ji or Brahma Tattva or Rajya Palana, whatever. He was in ekant. Ekante upastitam prabhum. The Lord is Prabhu Rama because he is Bhagavan. Lord is Prabhu Rama because everybody accepted him as Prabhu. He is specially Prabhu for Lakshmana Swami because throughout life Lakshmana ko Sri Ram ji Prabhu hai. Prabhu means the one who can do the Anushasana. Prabhutvam. Anything he can tell and we have to do everything. Anything he can give us, reward or punishment, we have to go through. That Anushasana Karta ko Prabhu kehte hain. And the Prabhus like Lord Rama, they do any Anushasana only in the interest of the world and bhaktas. उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं इसलिए. सो कदाचित एकांते उपस्थितम प्रभुम रामम. That Ram ji, who is the Ramalalita Pada Pankajam. The one whose Pada Pankaja is always Lalita by Mahalakshmi Mata. Ramalalita Pada Pankajam. Beautiful, no? Narayana, Lakshmi is always doing the Lalanam of this Pada Pankajam. So Rama is Shakti. So the Lord whom the Shakti also worships. She does everything as told by him, only for him. To the Rama Lalita Pankaja, Rama Prabhu, who was seated Ekanta Sthiti mein, to him Saumitrihi, Sumitra Mutra, Lakshmana Swami. Asadita Shuddha Bhavanaha. He Asadita means obtained. Shuddha Bhavanaha, in his heart the purity. It is established in him. Without Shuddha Bhavana, only he went into near to his brother. So these are the qualifications of a disciple to get knowledge from the Guru. Otherwise, Guru will not give. Shuddha Bhavana. Bhavana Shuddha is about all the three things. One, what is your attitude towards whom we are going? Shuddhata. What for you are going? The intentional aspect Shuddhata. Then your relation with that person whom you are going. Shuddhata. So the attitude towards Rama is Bhagavan. This is the Shuddhata in Bhavana. Second is wanting to know the truth, the intentional purity. Third, himself as a bhakta, as a shishya, with all the vinayata, even though throughout life he lived with Rama, he never took Rama for granted. He maintained that distance and never allowed the contempt to happen. Therefore, he could ask
the Tattva Jignasa Sambandhi Prashna, Bhagavan could give answer and he could receive. That's the meaning of Vishuddha Bhavanaha. Okay? Saumitri Asadita Shuddha Bhavanaha. Second is, having gone there, Pranamya, he did salutations. Okay? Pranam to anybody will do. You know? The political leaders Pranam. So many other people. Hey Rama. Mm. Mm. Bhaktya Pranamya. His salutation was with full bhakti. What is the bhakti ke saath pranam means? Total offering himself to the Lord. हमेशा याद रखना, detailed explanations also, one word explanations also. Bhakti means offering everything to God. Direct meaning. Detailed चाहिए तो offering all the upadhis or through upadhis whatever is done, doing only that which is related to the Lord, which is pleased to the Lord, which the Lord tells us to do and doing it and offering to Him. These are all subsequent explanations. But basic bhakti means arpanam. So pranamya bhaktya. कैवल्य उपनिषद का पहले मंत्र ऐसा ही होता है. प्रणम्य भक्त्या. Then vinaya anvita. Full of vinayata, humility, humbleness. Not to test the brother, not to check his own wisdom. Vinaya anvita. Full of the vinayata in him. अम्रवीत इस So विनय के साथ भक्ति से प्रणाम करते हुए शुद्ध भावना लेकर लक्ष्मण स्वामी प्रभु भगवान राम जिनके चरण कमल को लक्ष्मी माता सेवा करती है, जो एकांत में बैठे हैं, उनके पास जाकर अब्रवीत. No, such lokas, hundreds of them came. We have in this fervor only explained. You heard I spoke to you, but did it create any meaning in our heart? Have we at least once paused and ourselves became Lakshmana Swami with all these qualities, and in mind, heart in heart, approached our Guru or Ishtadeva? That is what. Our problem is we are only in Siddhanta, Siddhanta, Siddhanta. कब शुरू होगा ये भगवान? साधना साधना साधना, है ना? पोती बड़े बड़े जगमुआ. We are the proof for that. I am more proof than you. पोती पढ़ी जा रहे हैं सुबह दोपहर शाम. सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत. This is I am doing it. Lord is making us do it all. हमारे हाथ में क्या है? That is the way He wants to bless us. But we have to be conscious. Such topics when studied, the lakshanas of the shishya bhakta, gujignasu mokshu, we have to obtain them. No more those days and stage of carelessness, doubting, questioning, testing the guru, half-heartedness, immaturity, in between the class only running away, in the class looking at the whole world with क्षिप्त विक्षिप्त भूमिका. ये सारे बचपना कह सकते हैं, छोड़कर as serious, sincere and gambhira as Lakshmana Swami we have to become. Then as it was revealed to him through this Rama Gita, the Tattva, when we are going to study, for us also it gets revealed. Okay. So Vinayanvitaha Bhaktya Pranamya Vishuddha Bhavena to that Rama, Rama Lalita Pada Pankaja, who is Ekante Stitaha, having gone to him, Abravit. What did he speak? First, in the Shloka 4, he does the Stuti of Rama as Parabrahma. Second one, he surrenders to the Lord. Shloka number 5. उसमें second part में what he wants to know from the Lord, that question he asks. From the next shloka onwards, Bhagavan starts replying. It's a beautiful reply. All inclusive, all complete,
All wonderful, all excellent reply. Whole Rama Gita is beautiful. Okay, now what did Lakshmana's words to Rama? Tvam, O Lord, you are Shuddha Bodha Asihi. Verily you are Shuddha Bodha. Shuddha Bodha Jnapti Swarupa. In that Satyam Jnanam Anantam Brahma, that Jnana Jnapti Swarupa. That Shuddha Bodha where the Jnata Jnanam Jnayam Triputi and the Vrittis is not there. Or that in which Drashta Drishya dichotomy is not there. Shuddha Bodha, pure consciousness. It is there in all of us, every moment, in all planes of our life. Jagara Sapna Sushupti. We are not aware of it, and we are aware of the three avasthas only. Therefore, we are only in this, though it is eternally going on, we are not able to recognize. So that Shuddha Bodha Swarupa, Parabrahma is Rama. So this answers Parvati's doubts also. Shivji is telling Parvati ji entire Adhyatma Ramayana. She has a doubt regarding Rama is a Brahman or forgotten his Brahma Tattva, became a human being and suffering for the wife. So how can I worship him? All that was her doubts we have seen. Tvam Shuddha Bodhosi explained. Second, Sarva Dehinam Atma Asi. Sarva Deha. In every Deha there is a Dehi. That Dehi is identified with that Deha is called as Jiva. And to every of these Dehi who is identified with his own Deha, Paramatma is Atma. Without whom that Jiva can't be. Without that Jiva, he can't identify with the Upadhi and the expression of the multitude in the world. We can't see. So Sarva Dehinam Atma. So Shuddha Bodho says Brahma Swarupa, Satyam Brahma. Sarva Dehinam Atma is Sarvatmya Bhava. See, we have seen that Taittiriya Upanishad, Mundaka Upanishad. First Atma Jnana, then Brahma Jnana, then Brahmatma ki Bodha, then Sarvatmya Bhava. आत्मा असी सर्वदेहिना. इसका अर्थ कितने शास्त्र पढ़ पढ़कर विचार करके ऐसे सूक्ष्म विषयों का पकड़ मिल जाता है, सोच लेना. वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स इट. केदारनाथ पहुंचना है. जस्ट नाउ वी लेफ्ट आवर हाउस. वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वेयर एवर वी आर अप टू गौरीकुंड, देन वहां से आगे. सो आत्मा से ही सर्वदेहिनाम. दो बातें हो गए. देन अधीशः असि. अधीश मीन्स सिंगल ईश्वर. ईश्वर और अधीश्वर. In your control only, everything happens. Srishti, Sthiti, Laya. Sthiti, Kala, everything. Adhishaha Asihi. Third one. Fourth one is Nirakrutihi Swayam. You are any Akara Rahita. Akara कहते ही we should be wise enough to understand the background of what Upanishads we studied, that through any of the Upadhi, Bhagavan is not Upalambdha. So therefore he has not got Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha Adi Akriti. Thus not available to Jnanendriyas. He cannot be available to the speech of the mouth, concept of the intellect, emotion of the mind. तो इन कोई भी उपाधियों से पकड़ने वाला आकृति उनको नहीं है. So इस निराकृति. So त्वं शुद्ध बोधोसि आत्मासि सर्वदेहिनां निराकृति. आज अधीशः third one. Fourth निराकृतः स्वयं निराकृतिः. Okay, beautiful. Next line is wonderful. To whom this you is experienced as their own self. भगवान लक्ष्मण जी खुद कहते हैं प्रतीय से. You are experienced. हो महामते. The Lord of large heart, you are experienced by whom? ज्ञान दृशा. Not अज्ञान दृशा और चर्म चक्षु, जिनकी ज्ञान दृष्टि हो गई. For them, you are available, you are experienced, you are seen, you are recognized. As what? This word. Shuddha Bodha, Atma Sarvadehinam, Adisha Nirakta. Now, where from this Jnana Drushti comes is $1,000,000 point. Fourth line says, what it says? Ki Padabja Brungahita Sangha Sangina. Those people who are in the Sangha of those
bhaktas who are like the mrunga always at the lotus feet of the Lord. भगवान के चरण रूपी अब्ज लोटस के ऊपर ही हमेशा मंडराने वाला भृंग के संग में रहने वाले जो है, उन साधकों को ज्ञान दृष्टि मिलेगी. एंड टू देम प्रतीयसे यू आर एक्सपीरियंस्ड. See, when we are going slowly, how clear the picture is understandable. But the point again, we forget it. So, मनन करना है, वैल्यू देना है, प्रार्थना करनी भगवान से, एक ज्ञान को दृढ़ता से पकड़नी है, उसका अभ्यास करना है. बहुत मुश्किल लगता है ना, बट क्या करें, इन द एवोल्यूशनरी पाथ इट इज लाइक दैट. यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड नॉट इम्पॉसिबल. दैट्स व्हाई शनै शनै, धीरे धीरे ही करो जितना कर सकते हो. थक जाते हैं तो रेस्ट इन द लैप ऑफ द गॉड और एट द फीट ऑफ द गुरु. महामते ज्ञान दुषां प्रतीयसे पादाब्ज भृंगायित संग संगिनाम. Okay, those who are in the sangha of those Mahatmas who are always in the sangha of the lotus feet of the Lord, by themselves becoming the Bhrunga. Bhrunga का काम क्या है? मकरंद ग्रहण. सो भगवान के चरण रूपी भृंग भव अब्ज लोटस में कौन सा मकरंद है? भक्ति वाला. So the poetically said, but the direct simple meaning is those who have taken Sharanagati at the Charana of the Guru Parampara, Guru Deva, Guru Tattva, that Guru's Kripa se Jnana Drushti aayegi, then to such people, this Lord, who is here said now as Uddhabodaha, Sarvadehinam Atma Adeshaha, and Nirakruti, these Anumoti comes. How abstract they appear to be, for those who are right now just now listening to classes. But you, because listening from last 2-3 years, you are able to understand. Those who are just now coming, if they continue listening, then those sargas unko bhi pakad mein aayega. Anything make man becomes perfect in everything when he goes on doing practice of it. Okay. Now having this way, praise the Lord to be Brahma Tattva. He is talking about himself. In this, he is asking the question and he is telling about himself. दो लाइन है, सारांश आज बताएंगे, डिटेल्स हो सके तो कल. अहम, me. What are you? Why have you come? Hey Brahmo, O Lord. Tava padambujam prapannaha asmi. I have totally surrendered at your lotus feet. Very clear. That is called as asadita shuddha bhavanaha, lakshana of Lakshmana. So tava padambujam prapannaha asmi. There is no doubt. Do we have this conviction in our heart that we have surrendered at the feet of the Guru from the heart to the God, to the Shastra? डाउट है, इसलिए हमको ज्ञान जरा तुरंत नहीं मिल रहा है. बट लक्ष्मण स्वामी नो डाउट. अहम तव पादाम्बुजम हे प्रभो प्रपन्नः अस्मि. व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ योर चरण? टू थिंग्स आर टोल्ड. वन, भव अपवर्गम. सेकंड, योगी भावितम. वन इज योर चरण, हूएवर होल्ड्स फॉर देम द भव का अपवर्ग हो जाएगा, संसार से मोक्ष मिलेगा. संसार से मोक्ष मीन्स all the limitations experienced, conditions experienced because of the upadhis is transcended, and unconditional infinite experience is gained by identifying with unconditional infinite Paramatma Tattva. That's called is Bhava Apavargam. Then the same charana of you are Yogi Bhavitam. Bhavitam means bhakti se yogi log अपने हृदय में इस चरण का धारणा करते हैं आपके. That's what ईश्वर प्रणिधानाद्वा according to yoga darshan. The two ways. Yogis, having controlled their senses and mind to a great extent, focus it in holding on to feet of the Lord in their heart, by which Bhagavan's kripa comes and the yoga darshana happens to them. They are evolved. Less evolved, शुरू से ही भगवान के चरण को पकड़ते हैं. भगवान alone makes them yogi. Then after becoming yogi of controlling senses mind, भगवान की कृपा से वो लोग फिर से वही भगवान के चरण अब दूसरे पर्पस के लिए पकड़ेंगे. Where earlier qualification came, now yoga darshana happens. चित्तवृत्ति निरोधः द्रष्टुः स्वरूप अवस्था. So I am prapanna to your feet, which are the giver of moksha, which are surrendered to
by the yogis. Okay, about him he said. Now what he wants from the Lord. He says in this two line, Yatha, that means by which Anjasa. Anjasa means quickly and effortlessly. Ajnana para varidhim. Ajnanam apara varidhim. Apara, endless, shoreless, Varadi, ocean of Ajnana. So, ocean, shoreless ocean of ignorance I am in. Yatha, that means by which Sukham Tarishyami. Easily I can cross. Tatha, in that way. Anushadhi Mam. This Anushadhi word is coming in every text. Instruct me, guide me. That what I have to do for crossing this endless shore of ocean of samsara or ignorance. Beautiful, no? Then to this, Bhagavan will give the reply. एक एक श्लोक का मिलियन मिलियन डॉलर. तो मैं तो एक श्लोक एक ही दिन करूंगा या 2 श्लोक मैक्स और 3, उतना इतना ही हो पाएगा. चलो कल देखते हैं बाकी. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री रामचंद्र भगवान की जय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. ओम भाग्याब्धिचंद्रिका भक्त चित्तके की गणागना रोगभरत दम्भोलेर मृत्युदार कुठारिका ये नमो नमः. ओम नासै रोग हरे सब वीराजमत निरंतर हनुमत मीरा. ओम श्री हनुमत मीराय नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते नमः. ओम ओम नमः शिवाय. 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 ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गुष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. राम नामम राम 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 राम. We are doing Dattatreya Sahasranamavali. Yesterday we did 200. Sankalpa is done. From 200 Anekatmane Namaha. Aram se just feeling the meaning of it, chant it. This upasana of Namasmarana and Ucharana we want to do every day so that we are blessed by the Lord to come out of all funny prarabdhas of us which we invoked through doing all nonsense in the earlier lives, so that our sankalpa of sadhana happens effortlessly without much of the difficulties. 200. Om Ata Shri Dattatreya Sahasranama Valihi
ओम अनेकात्मने नमः। ओम स्वयं ज्योतये नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम दिव्य ज्योतिर्मयाय नमः। ओम सत्यविज्ञान भास्कराय नमः। ओम नित्यशुद्धाय नमः। ओम पराय नमः। ओम पूर्णाय नमः। ओम प्रकाशाय नमः। ओम प्रकटोद्भवाय नमः। ओम प्रमादविगताय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम परविक्रमाय नमः। ओम योगिने नमः। ओम योगाय नमः। ओम योगपाय नमः। ओम योगाभ्यास प्रकाशनाय नमः। ओम योक्त्रे नमः। ओम मोक्त्रे नमः। ओम विधात्रे नमः। ओम त्रात्रे नमः। ओम पात्रे नमः। ओम निरायुधाय नमः। ओम नित्यमुक्ताय नमः। ओम नित्ययुक्ताय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्यपराक्रमाय नमः। ओम सत्वशुद्धिकराय नमः। ओम सत्वाय नमः। ओम सत्वभृतांगदये नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्रीवपुषे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम अमरार्चिताय नमः। ओम श्रीनिधये नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम श्रेष्ठाय नमः। ओम श्रेयस्काय नमः। ओम चरमाश्रयाय नमः। ओम त्यागिने नमः। ओम त्यागार्थसम्पन्नाय नमः। ओम त्यागात्मने नमः। ओम त्यागविग्रहाय नमः। ओम त्यागलक्षणसिद्धात्मने नमः। ओम त्यागज्ञाय नमः। ओम त्यागकारणाय नमः। ओम भोगाय नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम भोग्याय नमः। ओम भोगसाधन कारणाय नमः। ओम भोगिने नमः। ओम भोगार्थसम्पन्नाय नमः। ओम भोगज्ञानप्रकाशनाय नमः। ओम केवलाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम कंवाससे नमः। ओम कमलालयाय नमः। ओम कमलासनपूज्याय नमः। ओम हरये नमः। ओम अज्ञानखण्डनाय नमः। ओम महात्मने नमः। ओम महदादये नमः। ओम महेशोत्तमवन्दिताय नमः। ओम मनोबुद्धिविहीनात्मने नमः। ओम मानात्मने नमः। ओम मानवाधिपाय नमः। ओम भुवनेशाय नमः। ओम विभूतये नमः। ओम धृतये नमः। ओम मेधायै नमः। ओम स्मृतये नमः। ओम दयायै नमः। ओम दुःखदावानलाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम प्रबुद्धाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम कामग्ने नमः। ओम क्रोधघ्ने नमः। ओम दम्भदर्पमदापहाय नमः। ओम अज्ञानतिमिरारये नमः। ओम भवारये नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम रूपकृते नमः। ओम रूपभृते नमः। ओम रूपिणे नमः। ओम रूपात्मने नमः। ओम रूपकारणाय नमः। ओम रूपज्ञाय नमः। ओम रूपसाक्षिणे नमः। ओम नामरूपाय नमः। ओम गुणान्तकाय नमः। ओम अप्रमेयाय नमः। ओम प्रमेयाय नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम प्रणवाश्रयाय नमः। ओम प्रमाणरहिताय नमः। ओम अचिन्त्याय नमः। ओम चेतनाविगताय नमः। ओम अजराय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम अक्षरमुक्ताय नमः। ओम विज्वराय नमः। ओम ज्वरनाशनाय नमः। ओम विशिष्टाय नमः। ओम वित्तशास्त्रिणे नमः। ओम दृष्टाय नमः। ओं दृष्टान्तवर्जिताय नमः। ओं गुणेशाय नमः। ओं गुणकामाय नमः। ओं गुणात्मने नमः। ओं गुणभावनाय नमः। ओं अनन्तगुणसम्पन्नाय नमः। ओं गुणगर्वाय नमः। ओं गुणाधिपाय नमः। ओं गणेशाय नमः। ओं गुणनाथाय नमः। ओं गुणात्मने नमः। ओं गणभावनाय नमः। ओं गणबन्धवे नमः। ओं विवेकात्मने नमः। ओं गुणयुक्ताय नमः। ओं पराक्रमिणे नमः। ओम अतर्क्याय नमः। ओम क्रतवे नमः। ओम अग्नये नमः। ओम कृतज्ञाय नमः। ओम सफलाश्रयाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम यज्ञफलदाय नमः। ओम यज्ञाय नमः। ओम इज्याय नमः। ओम अमरोत्तमाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्रीगर्भाय नमः। ओम खगर्भाय नमः। ओम कुणपेश्वराय नमः। ओम मायागर्भाय नमः। ओम लोकगर्भाय नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम भुवनान्तकाय नमः। ओम निष्पापाय नमः। ओम निबिडाय नमः। ओम नन्दिने नमः। ओम बोधिने नमः। ओम बोधसमाश्रयाय नमः। ओम बोधात्मने नमः। ओम बोधनात्मने नमः। ओम भेदवैतण्डखण्डनाय नमः। ओम स्वाभाव्याय नमः। ओम भावनिर्मुक्ताय नमः। ओम व्यक्ताय नमः। ओम अव्यक्तसमाश्रयाय नमः। ओम नित्यतृप्ताय नमः। ओम निराभासाय नमः। ओम निर्वाणाय नमः। ओम शरणाय नमः। ओम सुहृते नमः। ओम गुह्येशाय नमः। ओम गुणगम्भीराय नमः। ओम गुणदोषनिवारणाय नमः। ओम गुणसङ्गविहीनाय नमः। ओम
योगारेर्धर्मनाशनाय नमः ओम आनन्दाय नमः ओम परमानन्दाय नमः ओम स्वानन्दसुखवर्धनाय नमः ओम सत्यानन्दाय नमः ओम चिदानन्दाय नमः ओम सर्वानन्दपरायणाय नमः ओम सद्रूपाय नमः ओम सहजाय नमः ओम सत्याय नमः ओम स्वानन्दाय नमः ओम सुमनोहराय नमः ओम सर्वाय नमः ओम सर्वान्तराय नमः ओम पूर्वात् पूर्वतराय नमः ओम खमयाय नमः ओम खपराय नमः ओम खादये नमः ओम खं ब्रह्मणे नमः ओम खतनवे नमः ओम खगाय नमः ओम खवाससे नमः ओम खविहीनाय नमः ओम खनिधये नमः ओम खवराश्रयाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम आदिरूपाय नमः ओम सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ओम अमोघाय नमः ओम परमामोघाय नमः ओम परोक्षाय नमः ओम वरदाय नमः ओम कवये नमः ओम विश्वचक्षुषे नमः ओम विश्वसाक्षिणे नमः ओम विश्वबाहवे नमः ओम धनेश्वराय नमः ओम धनञ्जयाय नमः श्री दत्तात्रेय परमात्मने नमः थैंक यू हे राम ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णु मंगलम श्री कुरुक्षेत्र ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभ तन्नो राम भार्याय विद्महे भूजाय तन्नो सीता ये में व्याख्या बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय उमावर चंद्र चूर्ण भगवान की जय श्री रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र उपवास पातंजलि उपदेश अध्यात्म सुसवित शिव पुराण सम सनातन वैदिक संस्कृति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास शास्त्र की जय श्री वेद सुखदेव सूताद भागवताचार्य की जय श्री वेद वशिष्ठ वाल्मीकि विश्वामित्र तुलसीदास रामायणाचार्य की जय श्री वेद व्यास वैशंपायन याज्ञवल्क्य आदि शंकराचार्य ब्रह्म विद्याचार्य हिरण्यगर्भ कपिल पतंजलि व्यासादि योग दर्शन बोलो भाई सब संतन की जय सद्गुरुनाथ आज के आनंद की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद जानकी जीवन स्मरण जय राम राम अम्बे अम्बे आदि शक्ति माता की जय श्री दत्तात्रेय भगवान की जय समस्त श्रोता भक्त साधक सेवा उपासक जिज्ञासु धर्म संस्थापक गण की जय ओम Mm.